Need, my lord, with respect, अगर देखें सिद्दीकी साहब, आई नॉट, मुझे अभी तक आपके खूबसूरत दलाइल से मैं मुफीद नहीं हो पा रहा हूँ। आप जरा अपने दलाइल अपनी मर्जी से कर लें, आप सवाल नोट कर लीजिए, आप हर चीज पे कमेंट, आप अपना दलाइल तो देना चाह, फिर आप कल आप कहेंगे कि मेरे दलाइल ही नहीं सुने जा करके। आप चलें थोड़ा बढ़ा लें आगे बात को। With great respect to my brother, independence judiciary is not just the external aspect. The most important is internal independence and institutional independence. अब आपने concede कर लिया कि this is a law which actually secures the internal and institutional independence. मैंने नहीं किया। ओहो, आपने कहा खाली तरीका ठीक नहीं। अच्छा लॉ है। इंटरनल और इंस्टीट्यूशनल इंडिपेंडेंस क्या होता है? अगर एक चीफ जस्टिस के पास इख्तियार हो और वो इख्तियार इस्तेमाल हो सके टू अचीव सर्टन आउटकम्स इन केसेस एंड बाय कॉन्स्टिट्यूटिंग बेंचेस, दैट इज ए कंप्लीट इरोजन ऑफ इंडिपेंडेंट जुडिशरी. And this is an aspect which this court has never taken into consideration. So that is, दुनिया भर में, this is the most important aspect of independence of judiciary. आपको पता है बाकी मुल्कों में क्या होता है? जुडिशियल कैलेंडर स्टार्ट होने से पहले फुल कोर्ट बैठता है और वो बैलेट से बेंचेस बनते हैं, चीफ जस्टिस नहीं बनाता. और बाहर अगर आप ये बात करें कि चीफ जस्टिस बेंच बनाता है तो वो शायद इस बात को एक्सेप्ट कर सकते हैं. या बैलेट होता है या रेफल. कंट्रीज लाइक नेपाल, स्टार्ट ऑफ द कैलेंडर ईयर पहले बैलेट होता है कि बेंचेस कैसे होंगी. चीफ जस्टिस का कोई इख्तियार नहीं कि केस आज आया है और कल मैं अपनी मर्जी का एक बेंच बना दूं इस केस को सुनने का, जिसको मर्जी मैं बिठा दूं. ये चीजें तो ये सारा कानून जो है ये वाजे कर रहे हैं चीजों को, इंडिपेंडेंस को तो बेहतर कर रहा है, स्ट्रॉन्ग कर रहा है. आपने रूल्स बनाए हैं, उस रूल्स की बात की जा रही है. आपकी जजमेंट अपनी है. जवाब दे रहे हैं, आप दलाइल नहीं देना चाहते हैं, आप जवाब ना दें, दलाइल दे दें. आप इस तरह कीजिए कि आप अपने दलाइल एस्पेक्ट अभी जो आप बात कर रहे हैं, आप अपने दलाइल मुकम्मल कर लें. वर्ड आर्टिकल 191 में लॉ लिखा है, whereas for example in relation to the review jurisdiction उसमें act of parliament लिखा है. It seems to me that even now if you go literal text of the constitution, that there is presumably a difference between the two, and law is in a common law tradition like Pakistan is well understood to mean statute law and judge-made law or case law. Yes. Now, Article 199 sets apparently a hierarchy. First is constitution, fundamental right, independence of judiciary. Next is law. Now, if law means, is the question to you, if law means statute law and case law, the two are then co-equal, because both are incorporated in law. So the question that strikes me is that this whole principle, rule, whatever you want to call it, that the Chief Justice is the master of the roster, in fact is not in Order 11. It is given in judgments of the Supreme Court, in law. So the question therefore is, can Parliament, which is operating at the same level, law co-equal, can Parliament make, in the context of Article 191, and this goes to Section 8 of this particular law, can it make a law overriding in relation to the practice and procedure of the court, judge-made law, which is at the same pedestal? Can they do that? No, they cannot. Seems to me that even if we literally look at Article 191, perhaps it is unconstitutional. सब फिर अगर आपको कोई दलाइल नहीं देना है, और नहीं सुन लीजिए ना, आप तो हर के जवाब ही दे रहे हैं, तो आप अपनी पिटिशन तो आर्ग्यू नहीं कर रहे हैं, मुझे नहीं लग रहा है. आप कोई दलाइल, आप दलाइल देके खत्म कर रहे हैं, फिर आपसे सवाल पूछ लेंगे, आखिर में हमारे जहनों में होंगे, ठीक है, या हम अपने जजमेंट्स में लिख देंगे, हर जज अपनी राय लिख देगा अपनी मर्जी से. आप प्लीज अपने दलाइल दीजिए. May I proceed? जी प्लीज. Sirf, I'll only make one observation. It is settled law by law that the Parliament has the power to make our judgments ineffective.
And this is a precedent जो कि is embedded in our constitution. If they are lawfully empowered, if the parliament is lawfully empowered, not otherwise. फिर आप बहस करने लगे। But surely that आप सुन तो लीजिए ना बात को, फिर आप नोट कर लें भाई, आप आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, Sir, may I आप proceed? जज नहीं May I हैं, आप proceed? हर चीज का वैसे जवाब दे रहे May हैं। I proceed? प्लीज डू सो। आपको इसके एक जरा supplemental आप चलें, शुरू कीजिए, बिस्मिल्लाह कीजिए। My learned brother asked you, surely that rule that Parliament can override judgments of the Supreme Court does not apply to a judgment which is interpreting constitutional setting or interpreting the constitution or setting or establishing constitutional law. That only either can be done by constitutional amendment or if the court itself revisits that view. I thought that was also settled. Yes. तो देखिए साहब जरा सिद्दीकी साहब एक क्वेश्चन, आपका कहना ये है कि 3 members अगर बैठ के बेंचेस बनाएंगे एज पर दिस लॉ तो ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पर के खिलाफ है। तो क्या हम 17 जजेस बैठकर जब रूल बनाएंगे, हम कोई ऐसा रूल बना सकते हैं जो जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को लेके एक शख्स के हवाले कर दे, या ऐसा रूल बनाए जो कॉन्स्टिट्यूशन के, क्या हम ऐसा कर सकते हैं? सर कर तो सकते हैं, आपने अगर एक बंदे को अनलिमिटेड पावर्स है। My lord, जस्ट वन मिनट, मे आई रिक्वेस्ट माय ब्रदर्स, इनको बहस तो करने दीजिए, हम सब सवाल बाद में कर लेंगे। आप प्लीज अपने हिसाब से अपने आर्गू my lord, कीजिए। See, Mr. Siddiqui, if I may just add, it is not a question of ये law गलत है या ये law बुरा है या अच्छा है. The fundamental question here is of competence. yes. Who is competent to make whatever it may be called the rules of the law? If ये तो आपने somebody आर्ग्यू is नहीं not किया अभी तक। competent, तो मैं ये तो कह रहा हूँ, आप हमें रोकें, आप कहें मुझे आर्गुमेंट सुन सर लीजिए। मैं तो कह रहा हूँ कि कॉम्पिटेंस नहीं है पार्लियामेंट। आप बताएं ना, हमें शिक दें कायरीन की। प्लीज आर्गू। डायरेक्ट उसी पे आ जाए मेरे ख्याल में। इसी पे आ जाए, यही सवाल है। देखिए मैं आपके आप देखिए, आप हमसे ज्यादा समझते हैं, वकील हैं, यकीन हम लोगों की अपनी अपनी राय हैं, ठीक है। मुझे आप जरा सुन लीजिए ना 2 मिनट जी। वो हम अपने, अगर हम एक दूसरे से इत्तेफाक नहीं करेंगे, अलग अलग राय लिख देंगे, ठीक है। मेरे हिसाब से मुनासिब नहीं है कि हम सवाल के तौर पे अपनी राय आपको दें और फिर कोई हम दूसरा जवाब दें। हम सिर्फ सवाल पूछ रहेंगे आपसे, आखिर में आप अपने दलाइल दे दीजिए, हम उसको नोट कर लेते हैं। हमें पसंद नहीं आए तो फिर हम सवाल, इतने पसंद आए शायद सवाल ही ना पूछें, नहीं पसंद आए 2-4 सवाल पूछ लेंगे। अब आप बिस्मिल्लाह कीजिए जी। Lord, the concept of trichotomy of power is a concept well known to your lordships. The constitution, what are those provisions which relate to the trichotomy of power, and let us have a look at them. With reference to the Supreme Court, have a look at Article 176, my lord. जी Article 176. जी पढ़िए। My lord, Article 176 says, the Supreme Court shall consist of a Chief Justice, to be known as the Chief Justice of Pakistan, and so many other judges as may be determined by Act of Majlis Shura, Parliament, or until so determined as may be fixed by the President. What this article says is that one of the first steps in the appointment of the Chief Justice, he is the centrifugal force, he is the linchpin, and once he is appointed and the rest of these members are not appointed, the Supreme Court will be there. And then the judges will be appointed. प्लीज चलिए ना, डोंट स्टेट द ऑब्वियस, इट्स रिटन देयर। देखिए दिस अरे आप- नो यही तो सॉरी मुझे टू से अफसोस हो रहा आई आपको पता है अवाम कितनी पैसे खर्च कर रही है। सर, हमने मैं ये आप अवाम की खिदमत के ऐसी लिए- बातें तो ना करें हजूर। सर आप मुझे आर्ग्यू, तो आप एक तरफ कहते हैं आर्ग्यू करें, दूसरी तरफ आप मुझे आप कह रहे हैं ये आपने पढ़ लिया। I am interpreting, I am just You giving need your. interpretation of the obvious. Supreme Court comprises of Chief Justice and Judges of the Supreme Court. Obvious. No, it is not. अच्छा, it's not. It is not. बताइए। I am giving you
Your Lordship, a circumstance that let us assume, to understand the dynamic of Article 176, that assume there's a Chief Justice and there's no other judge. The question is, will the Supreme Court come into existence? The answer is I yes. will not answer your question. It We are will- not I here. am answering- We I are am not here in a answering. theoretical realm. Please don't. No, now this is will. not fair. We are not here in a theoretical realm to Let us discuss proceed what for- may or may not Let happen. us We are proceed- faced with a particular law. You challenge that law. Argue that case. Let us proceed further.